everyone, today we teach about explain the importance of the label on Mr. Okintam suitcase. Why does she hide it? ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें इम्पोर्टेंट ऑफ द लेबल ऑन मिस्टर ओकिंतम suitcase. Why did she hide it? Mr. Okintam was written his melodrama, very beautiful lady. The label on Mr. Okintam's suitcase has much importance. It shows her identity by her name, Mr. Judy Okintam. When the man comes, put off his hat and coat and keep them on the bench. He comes to know who she is, but he does not show her. When the man tells her his experience of meeting a Korean girl and changing his discussion that he wanted to die, instead decided to leave and take his revenge from the woman he who had killed his wife and daughter sorry वाइफ और बेटी को इसने किल्ड किया था कार एक्सीडेंट में. मिस्टर जोडी ओकिंटम एक ब्यूटीफुल लेडी थी और ये एक रिच बिजनेसमैन की वाइफ थी और शी वॉज वेरी ड्रिंकर एंड आफ्टर नोइंग in this she tries to hide her identity because she believe that we does not know. तो इसमें बता रहा है कि फ्रैंक ऑथर हैज़ रिटन मेलोड्रामा. ठीक है, ये मेलोड्रामा जो है ना फ्रैंक ऑथर ने रिटन किया, मतलब लिखा. वेरी ब्यूटीफुल. The label on Mr. Okintam's suitcase has much importance and it shows by her name, Mr. Jody Okintam. So आते हैं नेक्स्ट पे. At what point in the play we become certain that the man, now that the woman in the waiting room is Mr. Okintam, when in fact you think he discovered her identity. The conversation of the man shows that he had become to know that the lady in waiting room, Mr. Okintam, he had read the label when she. तो ये सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों से दोबारा समझाती हूँ. द कन्वर्सेशन ऑफ मैन, ठीक है, shows it that he had come to know that the lady has in the waiting room was Mr. Okentham. He had read the label when she gets up from her chair, strolls across the room and take up a position in front of her suitcase. The man gives her chance, goes to the door, opens it and walks out. During this time, she did her label under over in this way. The man confirmed that the woman in the waiting rooms, the same lady, Mr. Okintam. मतलब इसमें ये बता रहा है कि पहले तो सवाल में पूछ रहा है कि एट व्हाट पॉइंट इन दी प्ले डू वी बिकम सर्टेन दैट द मैन नाउ द वुमेन वेटिंग रूम इज मिस्टर ओकिंदम, व्हेन इन फैक्ट डू यू थिंक ही डिस्कवर्ड हर आइडेंटिटी. सो ये कन्वर्सेशन ऑफ मैन शोज दैट कर रही है कि भाई जो वेटिंग रूम में जो लेडी वेट कर रही है वो मिस्टर ओकेंटम. उनको कुछ हिंट्स मिली थी, जैसे
उनके जो है ना मिस्टर जोडी ओकिंटम थी, जो उनका एक स्वीट केस था, तो उसमें ना उनका नाम लिखा हुआ था। फर्स्ट साइन तो ये, दूसरा तो वो कन्वर्सेशन कर रही थी, तो वो जब उस मैन ने उनसे कहा कि जो है ना कि इस लेडी ने मेरी डॉटर को और वाइफ को हिट किया कार एक्सीडेंट में, देन वो उनकी साइड लेने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, और उनको सज़ा भी हुई थी 18 मंथ्स की। और ये पेपर में कुछ बेसिकली ये बुक है टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो है ना जीपीएस एचएल की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बुक है। और वी आर एक्सप्लेनिंग फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर, और ये क्वेश्चन आंसर भी स्टोरी से ही निकले हुए हैं, जिनको मैं हाफ पैराग्राफ में डिवाइड करके आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोग कहेंगे तो स्टोरी भी शेयर कर दूँगी, कोई मसला नहीं। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द ऑडियंस लाइकली to begin the suspect that she might be Mr. Ockendam. The audience and reader. So the audience and the reader begin suspect that she might be Mr. Ockendam when he says that she killed his wife and daughter. She defends Mr. Ockendam that she was not convicted of murder, and even she was not charged with murder, and pretends that she was sorry for the accident. So इसमें ये कह रही है कि जो है ना ऑडियंस एंड रीडर बिगिन टू सस्पेक्ट के जो है ना शी माइट बी मिस्टर ओकिंथम, एंड ही सेज दैट शी किल्ड हिज माई वाइफ। वो बता रहा था कि इसने मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को मारा, और इन्होंने उनका मर्डर किया, एंड ये अब सॉरी कह रही हैं। सो देन आगे क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। सो व्हाट मोटिव हैज़ द मैन was murdering her? The motive for murdering Mr. Okintham is to take revenge for killing his wife and daughter in car accident while she was driving her car very fast in the drunk condition, because she had agreed with her friend in 5 pounds. So ये बता रहे हैं कि मिस्टर ओकिंथम जो थी वो ड्रिंकर थी, और उन्होंने कार एक्सीडेंट में, जैसे पैदल चलने वाले लोग, ठीक है, तो जो रोड क्रॉस करते हैं लोग, ठीक है, इसी तरह इनकी जो है ना बेटी और डॉटर रोड क्रॉस कर रही थी, और मिस्टर ओकिंथम बहुत ड्रिंक करके कार चलवा रही थी, हैवी ड्रिंक करके। तो इसीलिए हैवी ड्रिंक करके इन्होंने कार एक्सीडेंट में कोई आपस में फ्रेंड्स ने शर्त लगाई थी। मिस्टर ओकिंथम एक रिच मैन लेडी थी, सॉरी बिजनेसमैन और रिच पर्सन लेडी थी, तो इसलिए उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। आई थिंक मर्डर नहीं, मतलब एक तो मर्डर में शामिल हो गया कार एक्सीडेंट। सो आगे चलते हैं। इन दिस लिटिल मेलो ड्रामा द ऑथर कीप्स on building up the tension and relaxing it until the final moment of tension when the murder is done. Briefly describe the chief moment of tension and what follow after each one. No debate is the biggest success of the author that he maintains suspense
and from the beginning to the end, the first moment of tension comes when he described the death of his wife and daughter. मतलब सबसे पहले जो टेंशन वाला मोमेंट था फर्स्टली, उसमें वो था जब वो अपनी वाइफ और डॉटर का कार एक्सीडेंट में स्पोक ऑफ his tension to kill Mr. Okentham. Another moment of tension is that when he told her that he was going to shoot her by showing his revolver. Similarly, the tension was finally created when he come back, opened the door and found her putting her finger to the nose, and then he took out the revolver, shoot her dead. मतलब ये मेंशन कर रहा था कि जिसने मेरी बेटी और वाइफ को किल किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और मुझे पता है कि वो कहाँ है, और वो सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। और ऑथर फ्रैंक ऑथर यहाँ पे फर्स्ट सस्पेंस ये क्रिएट हुआ कि मिस्टर जोडी ओकिंटम जो थी, ठीक है, उनके साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि जो है ना मेरी वाइफ और मेरी जो बेटी का जो कार एक्सीडेंट जिसने किया है वो मिस्टर जोडी ओकिंटम है, जबकि वो खुद जोडी ओकिंटम इनसे कम्युनिकेट कर रही थी। सो फाइनली जो है ना मिस्टर जोडी ओकिंटम जो थी वो तो बड़ी परेशान हो गई कि ये इनको ये नहीं पता कि मैं हूँ मिस्टर जोडी ओकिंटम, बल्कि फिर जो है ना ये हुआ कि वो जो मैन थे उनको तो सब पता था, जिनकी वाइफ और डॉटर को इन्होंने किल किया था उससे तो सारी चीज़ें पता थी कि हाँ यही है वो मिस्टर जोडी ओकिंटम, और उनको कंफर्म पता था बिल्कुल। बल्कि वो तो ये सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो सके ये वाकई मिस्टर जोडी ओकिंटम है। देन why in your opinion does the author make the पोर्टर जो मोस्टली ट्रेन में जो पोर्टर आते हैं जस्ट लाइक जो है ना गेट खटखटाते हैं, उनकी बात हो रही है ह्यूमरस करेक्टर। तो ये फ्रैंक ऑथर जो थे वो राइटर थे इस मेलोड्रामा के, एंड ही यूटिलाइज फुल यूज़ ऑफ हिज टैलेंट, उसने यूटिलाइज़ किया अपना टैलेंट। ही मेक्स द पोर्टर आ ह्यूमरस करेक्टर। पोर्टर का यहाँ पर ह्यूमरस करेक्टर था बिकॉज ही वांट टू क्रिएट चार्म, इंटरेस्टेड एंड लाउचर through the porter. His main purpose to relax the tension of the melodrama and suspense. And suspense is an important element in a thriller. Briefly show how the author keeps the audience suspense for the answer to pull question. Will he find out who she is? Will he kill her? Maintaining suspense from the beginning to the end is always the difficult task for author, but Frank author did it so beautifully, having some to know her name in the beginning. He moves the story physiologically, building up tension and relaxing it. The male passenger acts to the dramatically when he talked to Mr. Okentham and told her about his motive and wanted shoot her, but she convinced him to spare her life as punishment. तो ये फिर मिस्टर जोडी ओकिंदम से कहता है कि मैं उसको सज़ा दूंगा, जबकि उसको पता होता है मिस्टर जोडी ओकिंदम यही है। यही वही बात इस क्वेश्चन में दोहरा रहे हैं कि जो है ना फिर मिस्टर जोडी ओकिंदम इनको कन्विंस करती है कि उसको पनिश मिल चुकी है। देन write a brief character sketch of Mr. Okentham. Mr. Okentham is Machiavellian, ठीक है, मतलब जो है ना वो जो पॉलिटिक्स के बारे में डिसऑनेस्ट पर्सन हो, ठीक है, करेक्टर इन द प्ले, मतलब डिसऑनेस्ट स्पेशली जो पॉलिटिक्स के मामले में आते हैं।
सो मैचविलियन उसे कहते हैं। करेक्टर इन द प्ले, शी इज़ अ रिच एंड डिसोल्यूट वाइफ ऑफ अ बिजनेसमैन, शी इंजॉय द कंपनी ऑफ बैड करेक्टर। मतलब ये इंजॉय करती थी अपनी लाइफ लेकिन बैड करेक्टर के लोगों के साथ। शी इज़ हैबिचुअल ड्रिंक, इसकी हैबिट थी ड्रिंक करना। शी फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट्स द कॉकटेल पार्टीज, ठीक है, कॉकटेल पार्टीज ऑलमोस्ट ये ज्वाइन करने वाली थी, मतलब ऑलरेडी ज्वाइन की हुई थी ना इनकी, मतलब बैड हैबिट जो है ना मेल की वाइफ थी। एंड वंस शी ड्राइव हर कार वेरी फास्ट in a thickly populated area just to win a bid। मतलब इन्होंने ना मतलब वेरी जो है ना, एक तो इन्होंने ड्रिंक किया हुआ था और ऊपर से जो है ना ये इन्होंने कोई बिट लगाई थी आपस में और कार वेरी फास्ट चला रही थी और which she had agreed for 5 months। her car gets out of control, तो कार उनकी कंट्रोल से बाहर चली गई और उनकी वाइफ और जो उनकी बेटी थी उनको हिट कर गई, ठीक है। सो डिलाइबरेटली deliberately overturns it to footpath to save her own life and kill two pedestrians। मतलब दो लोगों को किल किया, वो इनकी एक डॉटर थी और एक इनकी वाइफ। द मैन हिज डिसकंसर्टेड विथ दी सेंटेंस ऑफ 18 मंथ, इनको जो है ना 18 महीने की सज़ा भी हुई थी और इन प्रिसन्स फॉर क्रशिंग टू पेडिस्ट्रेशन टू डेथ, मतलब इनकी वाइफ और बेटी की उसी टाइम डेथ हो गई थी। शी प्ले अ ट्रिक बाय बिंग विक्टिम ऑफ traumatic remnants and convincing him that the accident was manslaughter, नहीं remains and convincing him that the accident was the manslaughter not murder। That awful scenes will haunt me as long as I live. This is my real punishment, to have ever before my eyes the picture of what I have done till I die। When the man leaves the room, the lady springs to her feet, turns the door and puts her finger to her nose. At him the truth begins to emerge. He opens the door and takes complete the control the situation by pistol and obtains full justice in harmony with his perfect conscience। सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सॉरी और भी क्वेश्चन हैं, 9 और 10 कंप्लीट कर लें ये एक चैप्टर। सो what write a brave character which of water write a brave character sketch of water, ठीक है। सॉरी, water is a source of humor, satire, enjoyment, relaxation from boredom and seriousness of melodrama। Sir Frank Author introduced Potter as a humorous character। Potter एक humorous Frank Author ने ये डिस्क्राइब किया कि पोर्टर humorous character prove himself as a source of relief of the adjustment audience in the gloomy atmosphere of the play. He is very well aware of hard job, provide comfort of the passenger and carry language and bravely discussions। बस इसमें यही बता रहा था कि फ्रैंक जो ऑथर थे, ठीक है, जिन्होंने ये रिटन किया मेलो ड्रामा, वो बता रहे हैं कि ये पोर्टर एक ह्यूमरस करेक्टर पर्सन थे एंड ब्राइवली
briefly discuss whether to play. He had would have had a more satisfying ending ending if the man had not come back through the door since Mr. Okentubb vulgar and impatient gesture. It is true the part true that the play would have a more satisfying playing, and if she would have been very sincere in experiencing her grief and sympathy with the man, and it will be allowed the effect of man assured or Okintam's gullet, and given the opportunities to carry as intrinsic as the spear her out of the mistaking believe that his enemy on the street of raged. The man recognized what undesirable 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 ये बुक की मिस्टेक है or consequence of her killing may be for him when he says, do you mean that to kill would be more merciful and to allow you live would be my true revenge? But his realization comes late in the base, and there is a special providence returning for a suitcase, and when the lady sprang to her feet, turns the door and put her finger to her nose and emergence, and the open the door and takes up complete control of the situation by pistol and obtain medical justice in harmony with the perfect conscience. So अब स्टार्ट करते हैं. इम्पिटेंट मीन्स बेचैन, मर्सीफुल मेहरबान, इंटेंसिक अंदरूनी, मिचवेलियन, डिसहोनेस्ट स्पेशली इन पॉलिटिक्स. मैंने आप लोगों को बताया था ना डिसहोनेस्ट स्पेशली इन पॉलिटिक्स. सो ये वर्ड मीनिंग बहुत इजी है और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. एंड मैं दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चंस और स्टोरीज़ वगैरह डालने की कोशिश करूँगी ताकि जो है ना ये पूरा कोर्स कवर करवा सकूँ सॉफ्टवेयर का. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.